February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full union budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions, and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? What's the complete coverage of Budget 2023? Real-time analysis, expert takes all day on Money Control. Log on to www.moneycontrol.com for more. Good afternoon and welcome back to Money Control live stream. You're watching the closing bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. And bears continue to have an upper hand on Dalal Street. Once again, benchmark indices closing in the red. The Nifty just about managing to hold above the psychological 18,000 mark. Mid-cap shares fell more than frontline shares today. That was where much of the selling appeared to have been concentrated today. And barring banks, most of the other sectoral indices closed in the red today. The India Volatility Index, which is also known as the Fear Index, continuing to dip. Today it was down by about 1.2% to about 13.79. And among the prominent gainers in the Nifty, today we had Coal India, Power Grid, HDFC Bank, HDFC and ITC, while the laggards included HUL, Asian Paints, HDFC Life, JSW Steel and Nestle. So bears are back in the game once again. Absolutely, and Santo, one thing that I've marked और जो मेरा observation है वो ये है कि HUL, Nestle, Pidilite, Asian Paints जो high PE stocks हैं, results अच्छे हो या बुरे हो और कोई events हो ना हो, लेकिन PE contraction एक बड़ा हो रहा है. तो जो भी new age stocks हो, चाहे वो high valuation stocks हो, obviously बाजार जो है वो इतना rewarding नहीं है पहले की तरह. और अब जो है टाइम करेक्शन और वैल्यूएशन करेक्शन पे बाजार का फोकस चल गया है. इनफैक्ट अगर हम मिड कैप्स भी देखें तो बाजार जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में मिड कैप भी चल रहे हैं. यूजुअली उम्मीद ये रिजल्ट सीजन में है कि मिड कैप्स अच्छा करेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन जैसे अर्निंग्स आ रही हैं बहुत सिलेक्टिव मूव्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं. और हर मूव जैसे येस्टरडे आपने देखा होगा हेवेल्स रिजल्ट्स के बाद पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा था, पॉलीकैब एक पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा था. लेकिन आज आपने देखा कि ऊपर के लेवल्स पे काफ़ी सारी प्रॉफिट टेकिंग बनती हुई नज़र पड़ रही है. और जो हाई वैल्यूएशन हाई पी स्टॉक्स हैं यहाँ तो आपको पी कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट विजिबल दिख रहा है ये अर्निंग सीजन में. Well, and Yatin, there's also market chatter that some of the PMS funds are slowly seeing outflows. Probably Correct. Investors are beginning to lose patience, and that is prompting many of the portfolio managers to trim their exposure. And the high P stocks, Yatin, as you had mentioned, that's where the most of the gains have been made in the last couple of years, and probably that's why they also seem to make a natural choice for booking profits. So these are some of the trends playing out in the market at this point. And with that, let's move over to some of the stocks that caught our attention in trade this afternoon, beginning with Hindustan Unilever. HUL was the top loser in the Nifty today, falling by close to about 3%. Now, good set of numbers from HUL. Its home care, beauty, personal care segment saw double-digit growth. Also, the company continued to gain market share in almost 75% of its portfolio. The performance in the food and refreshment segment too was better than what the market was expecting. Positive commentary from the management also. They've said that the worst of inflation is behind, and they also feel that rural slowdown may be bottoming out. But at this point, clearly what the market does not seem to have liked is the increase in royalty rate that HUL plans to pay to its parent. That's been hiked from 2.65% to 3.45% in a staggered manner over the next couple of years, over the next 3 years, with most of it being front loaded in the first 2 years. Now, this is something clearly that the market seems to be unhappy about, and hence you are seeing some kind of selling pressure in the stock today. In fact, the royalty ghost is back. आज जो रिएक्शंस हमने देखे, यूनिलीवर ने HUL पे रॉयल्टी बढ़ाई, वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक पे एक 2% रॉयल्टी इंक्रीज़ की, और इन दोनों स्टॉक्स के चक्कर में आज नेस्ले भी पिट गया, क्योंकि
नेस्ले भी अपने पेरेंट स्विस पेरेंट को रॉयल्टी देता है। तो कहीं ना कहीं आज हमने ये देखा कि जो रॉयल्टी पेइंग स्टॉक्स हैं और ख़ास करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, यहाँ एक बड़ा सेल ऑफ आया। HUL की कहूँगा एक बात सैंटो के ये रिज़ल्ट अच्छे थे। उन्होंने ये भी कहा कि रूरल मार्केट्स जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से डिमांड फिर से एक बार वापस आ रही है, मार्जिन्स यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं, ग्रोथ इंप्रूव हो सकती है। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू था। बट आज जो मूड ख़राब किया है वो रॉयल्टी ने किया है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर ये लिखा था कि जो रॉयल्टी स्टैगर्ड मैनर में बढ़ाने वाले हैं वो तो बढ़ाने वाले हैं, लेकिन FY24 के प्रॉफिट पे लगभग 500 से 600 करोड़ का हिट आएगा। तो आई थिंक मार्केट डिड नॉट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट देयर विल बी अ 600 करोड़ काइंड ऑफ अ impact because of the increase in royalty, and that is why despite the cheer or the kind of strong results HUL gave versus market expectations, they got sold into and stock closed almost at the day's low, 4% up. Your stock. Okay, yeah. So the stock on my radar, both stocks are banking stocks. Let me talk first about ICICI Bank. They will report their numbers tomorrow. तो ICICI Bank के जो results आएंगे, expectation क्या है? Expectation है कि 21% की स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ आएगी, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छे होंगे, कंपनी के डिजिटल इनिशिएटिव से काफ़ी अच्छी इनकम होने वाली है, और एसेट क्वालिटी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो एक्सपेक्टेशन है कि ICICI बैंक का एक सॉलिड क्वार्टर होगा जहां आपको एडवांस ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट कमेंट्री आगे जाने पे कैसे कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेंगे, NIMs पे प्रेशर होगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो बैंक्स लो कॉस्ट डिपॉजिट्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कंज्यूमर्स भी समझ रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। तो वो एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं किस तरीके से पैसा लगाएं जहां यील्ड ज़्यादा हो, और इस कंपटीशन के चक्कर में शायद बैंक्स को भी अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़े, जो कि एक कॉस्ट सेंटर है। तो ये एक देखा जाएगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कहाँ है। ओवरऑल अगर हम Q3 की बात करें तो ICICI बैंक के रिजल्ट अच्छे होने चाहिए कल। Well, definitely, but at the same time, as you rightly pointed out, now the increase in interest rates is perhaps beginning to pinch. So far, Absolutely. they had been increasing the rate for borrowers, and that's why you saw an improvement in the net interest margins. Correct. But now the cost of funds, that is beginning to catch up. Well, Yatin, this whole thing about interest rates, the way markets have been performing in the last couple of, partly it was driven by the fact that the returns from FDs were quite low. Now that seems to be going in reverse at this point. I think most of the people we speak to on the ground, or the relatives, or the people around us, expectation is अब 8-8.5% का fixed deposit मिलना चाहिए, क्योंकि lot of cooperative banks, a lot of smaller NBFCs have already started offering that 8.5% kind of interest rates. And I think now people have understood that if you do not give me a better interest rates, I am going to some other bank or some other financial institution. So I think people are more aware and people are sensitive and people can sense that interest rates are going up. तो मुझे लगता है एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो सकता है बैंक्स के लिए आगे जाते हुए। चैलेंजिंग इन द सेंस के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स एंजॉय कर रहे थे वो शायद अब पिक आउट होना शुरू हो सकता है। And then the other angle also, Yatin, when interest rate goes up, to some extent demand also starts getting hit, especially as far as the personal loans are concerned. Correct. And now it's not just about getting a better rate of interest from FDs, Yatin, it's also that you're not making much of returns in the stock market for quite some time now. The indices have been moving within a narrow range. So it's a kind of double whammy, and which is probably encouraging more people to head towards banks. Well, the next stock on our watch list is Hindustan Zinc. This stock again one of the big losers today. Double whammy there again. The numbers, the third quarter numbers were below what market was expecting, 20% drop in profits. Also operating margins as well as the revenue numbers were also under pressure. Huge jump in power and fuel cost. That was up by close to about 43%, and that's what really spoiled the mood for the stock. At the same time, very interesting here, I think the bigger concern right now, it seems, is the deal wherein it will be buying Zinc International from its parent Vedanta for $2.9 billion. In addition to that, it will also be paying a 2% fee on the turnover as services and management fee to parent Vedanta. Both, I think, this is something that clearly the market does not seem to be liking. But again, if you look at the commodity sector as a whole, with the whole China reopening theme, at least the company might get some relief on that front, because the overall outlook at this point is that you could see commodity prices rising
because of renewed demand coming in from China. In fact, Santo, the way zinc prices have moved and the way silver prices have moved, these are the two things Hindustan Zinc, mines and processes. तो मुझे लगता है जिस हिसाब से जिंक और जो प्रेशियस मेटल के प्राइसेस मूव हो रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक ने एक नया 52 वीक हाई लगाया, लेकिन जैसे ही रॉयल्टी की बात आई सैंटो, यहाँ एक पिटाई होना शुरू हो गई. इनफैक्ट इन्होंने, मुझे लगता है जो रॉयल्टी का लेवल है 2% जानबूझ के रखा है, क्योंकि सेबी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लगता है. सो इफ द रॉयल्टी इज कैप्ड एट 2%, कोई अप्रूवल नहीं लगता, लेकिन 2% के जैसे ही ऊपर होता है, जैसे HUL के केस में इनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस सिनेरियो में. लेकिन वेदांता के केस में ये भी नहीं होगा. तो आई थिंक इसीलिए शायद इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत अपसेट और नर्वस हैं कि कैश फ्लोज कैसे हिंदुस्तान जिंक के आगे जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक तो जिंक इंटरनेशनल ने जो कैश फ्लोज हैं और जो फ्री कैश है जनरेशन, वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि एक बड़ा एक्विजिशन कंपनी करेगी, और दूसरा कि ये जो 2% रॉयल्टी है उससे भी शायद आपको प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा. Motilal Oswal has a neutral rating on the stock because it feels that at about 6.7 times EV to EBITDA for 1 year forward, the stock is definitely not cheap at these levels. एब्सोल्युटली. और जो आखिरी स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है कोटक महिंद्रा बैंक. फिर से एक बार ICICI बैंक की तरह ही कल कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट्स आएंगे. ICICI बैंक से थोड़ा बेहतर आपको ग्रोथ यहाँ दिखाई देगा. लोन ग्रोथ लगभग 21-22% के आसपास एक्सपेक्टेड है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे यहाँ सिक्वेंशली कोटक बैंक के लिए. और ऑब्वियसली हम ये वॉच आउट करेंगे कि लो कॉस्ट डिपॉजिट्स या कासा रेशियो कंपनी ने किस हिसाब से मूव किया है. ऑब्वियसली और एक चीज़ है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, वो ये है कि FII हेडरूम जो दिसंबर क्वार्टर का है वो देखना होगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ हेडरूम थोड़ा बहुत बनेगा लगभग 20% का टू द लास्ट क्वार्टर, MSCI का वेटेज भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है. तो रिजल्ट्स के अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा भी अवेटेड है कोटक बैंक के लिए. नजरें रखेंगे इस स्टॉक पे. So Yatin, besides these, which are the key numbers one should be keeping an eye out for? Obviously, see ICICI Bank, Bandhan Bank and Kotak Mahindra Bank. These are three banks जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं. ये तीनों बैंक पे नजरें होंगी, लेकिन नजरें होंगी बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज पे. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अब ये बेलवेदर बनने लगा है तीन बिजनेस का. एक तो इनके GRMs जो पेटकेम बिजनेस और जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, O2C बिजनेस के हैं, उन पे नज़रें रहती हैं. दूसरा कि रिटेल में किस हिसाब से फुटफॉल्स हुए, सेल्स ग्रोथ हुई, क्योंकि इतना बड़ा इनका नेटवर्क है कि एक प्रॉक्सी होता है रिटेल ग्रोथ को लेके, FMCG सेल्स को लेके, तो उनका आउटलुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. और तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है जियो, क्योंकि ARPUs किस हिसाब से हुए, 5G का क्या प्लान है, आगे जाते हुए सब्सक्राइबर एडिशन कैसे होंगे, टैरिफ हाइक होगा कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस भी मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. और भारती के पहले जब जियो के रिजल्ट्स आते हैं तो ऑब्वियसली पूरा टेलीकॉम सेक्टर इससे मूव होता है. तो ये देखेंगे कि ये जो तीन सिलेंडर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, सबसे पहले O2C, सबसे दूसरा टेलीकॉम बिजनेस जो कि रिलायंस जियो है, और तीसरा बिजनेस रिलायंस रिटेल, किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं. सेगमेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी आज के रिजल्ट्स के बाद. Well, and with that, it's a wrap on this episode of Closing Bell. Once again, thank you for watching. जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And we'll be back with you again on Monday at 9 a.m. Have a happy weekend till then. First February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full union budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions, and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? Watch the complete coverage of Budget 2023. Real-time analysis, expert takes all day on Money Control.